right? So I've got IDs, I've got first name, I've got last name, and I've got, let's say, salary. Okay. It's a very simple example I'm giving you all. ID, first name, last name और salary है. तो random IDs हैं. Suppose there are some random IDs, and there are first name and last names. जैसे अलग अलग फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, ठीक है. एंड आई हैव गॉट डिफरेंट सैलरीज. अलग अलग सैलरी रेंजेस हैं सबके. Just putting random figures. Now based on the ID, I want to find out the salary. Based on the ID, I want to find the salary. That we used to do, if you remember, with the VLOOKUP function. उसके साथ भी हम ऐसे ही करते थे. Based on the ID, we used to get the salary. VLOOKUP में तो हमने किया था, HLOOKUP में भी कर सकते हो. But what I'm showing you now is something different. I'm showing you now is something known as the index and the match function का combination. That's what I'm showing you all now. तो पहले मैं सिर्फ match function करता हूँ, and let's understand what will match function give me if I have an ID and if I want to find a salary. So salary के column में I'll put equals to match, an open bracket, and let us go into our क्या बोलते हैं, fx box, function box. चलिए आ गया function box. तो हमारा lookup value कहाँ है? हमारा lookup value है G2. कि भाई मैं जो कुछ G2 में डालूंगा उसका वैल्यू यहाँ पे करस्पॉन्डिंग आना चाहिए, ठीक है. तो लुकअप वैल्यू G2 है. अब बोल रहे हैं लुकअप एरे क्या है? लुकअप एरे मतलब इज नॉट टॉकिंग अबाउट द टेबल. लुकअप एरे मतलब कि यार एक पर्टिकुलर रेंज है जहां से हमको ये G2 का वैल्यू मिलने वाला है. वो रेंज क्या है? वो रेंज हमारा ये है A2 to A6. जो G2 है वो तो A2 और A6 के बीच में ही है क्योंकि आईडी है वो. और मैच टाइप हम हमेशा 0 करते हैं. क्यों? बिकॉज आई वांट एन एग्जैक्ट मैच. दिस इज हाउ our match function is created, where based on the ID I will get some value. Let us see ये वैल्यू क्या देता है. At the moment NA दे रहा है. चलिए let's put an ID 65. अरे क्या दे रहा है मुझे आंसर? ये आंसर 2 दे रहा है. Let's put 34. ये आंसर 5 दे रहा है. Let's put 84. ये आंसर 3 दे रहा है. So what is actually happening
is that when I'm typing the ID, it is telling me कि ये जो आप ID के बेसिस पे ढूंढ रहे हो, मैं आपको रो का नंबर बता रहा हूं कि अगर आपके पास 2000 रोज हो और उसमें 2000 रोज में से आपको पता लगाना है कि आपका ये आईडी का एम्प्लॉय कौन से रो पे है, तो आप उस एम्प्लॉय का आईडी टाइप करिए और मैं आपको उसका रो नंबर बता दूंगा कि हाँ भाई आईडी नंबर 53 रो नंबर 4 पे है, तो आप 4 पे जाइए, वहां से आपको पूरा डेटा मिल जाएगा. मैच फंक्शन is only giving me the location of that ID. It is not giving me the data of that ID. उस ID का डेटा मुझे नहीं दे रहा, वो उसका सिर्फ लोकेशन दे रहा है. तो मेरा वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ. I wanted to do what? Based on the ID, I wanted to find the salary. तो मेरे को वो सोल्यूशन तो अभी मैथ से नहीं मिल रहा. चलिए मैच को निकाल देते हैं. अब आते हैं इंडेक्स पे. Let us see if index can get me the salary. So I do equals to index and I go into the fx box. चलिए यहाँ पे क्या है, अरे यहाँ पे बोलता है array row number convert. ओके चलिए आ गया, वेरी गुड. मेरा फंक्शन बॉक्स आ गया. फर्स्ट थिंग ही टेल्स मी दिस इज द array कि ये डेटा कहाँ है. So what am I searching for? Salary. Okay. Next he straight asking me row number क्या. That means let's say I put 4 and I say okay, salary तो मिल गया, बट ये सैलरी है किसका. This salary has got generated based on the row number that I am putting. मतलब ये मैनुअल हो गया, ये ऑटोमेटिक काम नहीं है. अगर मुझे पता लगाना है कि कॉलम नंबर 3 में एम्प्लॉय का सैलरी कितना है, सॉरी रो नंबर 3 में एम्प्लॉय का सैलरी कितना है, तो मैं 3 डाल के ओके करता हूं, 1,02,000. ठीक है, मिल रहा है आंसर. अगेन द आईडी हैज नो मीनिंग, क्योंकि मैं आईडी को तो यूज ही नहीं कर रहा हूं इधर. तो मैच फंक्शन ने क्या किया, मुझे रो नंबर दिया. और इंडेक्स फंक्शन क्या कर रहा है, इंडेक्स फंक्शन बोल रहा है कि ठीक है भाई, आप सिर्फ वो पर्टिकुलर रो नंबर डालिए और मैं आपको सैलरी डिस्प्ले करके दे दूंगा. आप सिर्फ रो नंबर टाइप करिए 2, आ गया सैलरी 58,200. कि भाई रो नंबर 2 पे कितना सैलरी है उसको, 58,200. व्हाट वी विल डू, we will take both these formulas and we'll join them together. Let's see when they work together, the index and the match, do they give me what I'm looking for. चलिए, equals to index open bracket. What do I want? I want salaries. No problem. Salaries कहाँ है, इसमें है मेरा सैलरी. ठीक है. After index will look for the salary. What do I want? I want index to match. Now the computer will ask, match what? What should the index match? So I will tell the computer that I want index to match a value that I type in G2 and get me the result from the table which has got the values from A2 to A6.
व्हाट आई टोल्ड द कंप्यूटर, आप पहले इंडेक्स करो, आप पहले एक डेटा को कैप्चर करो, वो डेटा है मेरे सैलरी का डेटा, ठीक है, उसने कैप्चर कर दिया. Once index has captured that salary, next question index asks ki, what do you want me to do with this? Can you specify which row or something? I'll tell him no, I'm not specifying any row. This time I am telling you to match this data that you are trying to index based on a value which I am going to type in G2, and that value which I'm going to type is going to be stored or is stored in a table, column A, A2 to A6. Or in simple words, the value which I'm going to type here is a value which is there in column A from A2 to A6. उसके अंदर ही वो value है, आप उसको match करिए. 0 क्यों? Because I want an exact match. तो ये मेरा match का function close हो गया, और जो मेरा index का function था उसको भी मैंने close कर दिया. Now I've used the index and the match together. चलिए, let us type some ID. 65 मिल गया सैलरी 58,200. 53 78,300. It has started working beautifully now using the combination of index and match. I want a double lookup. चल भाई, ये क्या है? एग्जाम्पल को थोड़ा चेंज करते हैं, ठीक है, इधर मंथ्स डाल देते हैं और इधर ना फ्लेवर्स डाल देते हैं. मंथ्स डाल दिया है मैंने, इधर फ्लेवर्स डाल दिया है. अब आइसक्रीम दैट आई एम सेलिंग, इधर अलग अलग मंथ आ गए. चलिए, इतने मंथ्स डाल दिए मैंने, और यहाँ पे मंथ आएगा, और यहाँ पे आएगा फ्लेवर. Every month I'm doing sales based on the month and flavor. I want the sales. ये एक बड़ा perfect example है of how the index and match function works very well. इसको हम बोलते हैं two-way lookup. तो मेरे पास अलग अलग फ्लेवर्स हैं. जनवरी मंथ में मैंने ये सेल किया है, इतने फ्लेवर्स सेल किए हैं मैंने, इतने सेल्स अचीव किए हैं. फरवरी मंथ में वापस कुछ ना कुछ सेल्स किया है मैंने. Randomly I am just typing some numbers of what sales I have done in different months. जैसे मैं सेल्स करता गया हूं of different flavors in different months. अब मुझे क्या चाहिए? That the sales should be visible to me based on the month and the flavor. जो month डाला और जो flavor डाला उसका मुझे sales automatically मिलना चाहिए. चलिए, so sales is the automatic. So we put a formula here, index.
Now the question is, what should he index? Data कहां से capture करना है उसको? He has to capture all the data from here till here. Why have I taken this much data and not taken the months? That's the next question. Because my sales are only from B2 to D6. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में मेरा सेल्स थोड़ी है. मेरा जो सेल्स का वैल्यू है वो सिर्फ इतने ही डेटा के अंदर है. That's the reason I took only this much of data and I did not include the months. Are we clear till here? Yeah. अब I want Excel to match. चलिए match. तो Excel बोलेगा अब क्या मैच करना है मुझे. Excel will tell me now what do you want me to match. So I'll tell Excel I want you to match whatever I'm typing in G2, which is the month. And I want you to get that value of G2 from the column A. तो जो मेरा G2 का वैल्यू है, that value I am getting from column A. ठीक है. And that value has to be exactly matching. तो 0. तो एक स्टेप हो गया मेरा कि हाँ भाई जो मैं G2 में टाइप करूंगा that data will be extracted from the A column. Let's move further. Now I'm coming to the flavor. तो वापस हम चलेंगे मैच. चलो भाई मैच करना है. क्या मैच करना है? This time I want you to match the G3, which is the flavor. और जो फ्लेवर है वो मेरे टेबल में यहाँ पे है, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और वनीला. ये 3 फ्लेवर्स हैं. इनका भी मुझे एक्चुअल मैच करना है. तो व्हाट इज एक्सेल गोइंग टू डू? जैसे ही उसने एक पर्टिकुलर मंथ को कैप्चर किया, उसके बाद he captures a flavor. Automatically he will take the flavor and the month together and try to match it with the sales of that month. At the moment NAR. चलते हैं. Let's start off. पहले मंथ तो मैं बोलता हूँ हाँ भाई मार्च. okay. तो कौन सा फ्लेवर? वनीला. देखिए आ गया 754. मार्च में वनीला फ्लेवर I sold 754. सेम वे कोई बोलेगा मुझे अप्रैल में वनीला देखना है 732. अप्रैल में अगर मुझे चॉकलेट देखना है 783. मंथ ऑफ अप्रैल में I have sold 783 of chocolate flavor.
See how beautifully it works. If I have some data with some colors, yellow, green, blue, these are the colors of my products. And I might have a lot of data. I want over here that when I type my product, it should tell me the row number. That means it should tell me that that particular product is on which row of my table. ये प्रोडक्ट का कलर्स है और उसके बाजू में लेट्स से प्रोडक्ट का आईडी भी है. So I want Excel to find the row number where this product is there. For example, green color का product कौन से row पे है. चलिए, let's see how to do this. I'll put equals to, and this time we'll use a function known as match. ये अलग function है called as match. That means you are going to match for me the exact row number for my product. Go to the FX box. Now we have a totally different FX box over here. Lookup value. पूछता है where are you going to look up? I'll say I look up in A2. Same way जैसे we lookup में हम करते हैं. Lookup array क्या है? Lookup array मेरा टेबल का डेटा है. Suppose I select all of this. और match type मैं बोलता हूँ 0. जैसे हम वहां बोलते हैं false, वैसे यहां हम match type में डालते हैं 0. चलिए ओके करके देखते हैं. Let's put a product name. ये क्या हुआ? तो आया ही नहीं. See, it didn't come. नहीं आ रहा है. फर्क बहुत क्लियर कट है. मैं FX बॉक्स खोलता हूं. आप मुझे बताइए इसमें से फर्क क्या है. Lookup array, it does not say table lookup array. It says only lookup array. मतलब जो आपका रेंज है, कौन से रेंज में आपका वो डेटा है जो आपका A2 कैप्चर कर रहा है. तो जो रेंज में जिसमें मेरा डेटा कैप्चर हो रहा है वो मेरा रेंज सिर्फ इतना है, E6 to E8. मिल गया आंसर. अब जब मैं इधर कोई भी कलर डालूंगा मुझे पता चल जाएगा कि कौन से रो पे है. रो नंबर 1 पे येलो कलर है. ब्लू कलर इज ऑन रो नंबर 3 ऑफ माय match function. Will look up for a value based on the column. जिधर ये वैल्यू कॉलम में, जो कॉलम में वैल्यू है वो रेंज सेलेक्ट करना है और हमको वो ऑटोमेटिकली उस रो का नंबर दे देगा जहां पे वो पर्टिकुलर वर्ड इज टाइप्ड. This is where we use the match function. It is very useful if you have got 1000 rows और आपको straight away jump करना हो. You can use the match function over there to help you to locate it. Similar to like a find function only actually. आप अगर find भी करेंगे तो आपको यही होगा. अगर मुझे find भी करना है तो यही होगा. Naturally वो word type करूंगा तो वहां जाके मुझे लेके जाएगा. So this is the way we do it. अभी एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. 105 पे भी ब्लू है. अब मेरा मैच फंक्शन क्या करेगा? वन करेक्ट दिया. My match function
will find only the first occurrence of the word blue. The duplicate value is not coming here at all. Only unique values are accepted over here. And it will find the first occurrence. जैसे अगर यहाँ पे green होता और मैं यहाँ पे अगर green टाइप करूंगा, वो मुझे नंबर 2 रो का green दिखाएगा, not the green which is on row number 5. So it captures the first occurrence of a particular word और उसको पहले locate करता है वो. This is what the match function does. So I decide I want to display today's date. I'm simply going to type equals to today, opening closing bracket, and it shows me today's date. So today function actually allows us to see the current date, and this date will keep changing whenever we open the sheet. The next day, this date will change to the current date of the system. This is used a lot whenever you're preparing invoices or bills in Excel, where you want the date to automatically appear as you go on creating the bills. That's where it can be quite a useful tool. You don't want to every time type a date. Same way, we also have a function known as now. The now function gives us the date along with the time. So it tells us the date and the current time. And as I told you, this again will keep changing as and whenever you put on the computer and when you open the sheet, the date and time will be the current date and time of the system. If I want to display only the time, here there is a date, here there's a date and time. And I say, I don't want to display the date, I just want to display the time. In that case, this is what we do. We take the now function and we subtract it with the today function. And we get the time. This is how we can use three functions: today, now, and time. We also have a function known as workday. How does the workday function work? For the workday function to work, I need to have certain data. So if I have a particular date, let's say 12/18/2021, and if I put, let's say, number 8, and I say I want to find out which is the next working days after 8 days from this date. I want to find out which is the next working day 8 days from this particular date which I have typed. First of all, the date that you type has to be in the format in which your calendar is. The current date that I have typed over here is wrong because the format that I have used is the month, the day, and the year. Whereas it should be actually the day,
the month, and the year. Now the date that you're seeing is a correct date, 18/12/2021. 8 days from that day, which will be my working day. So I go work day, and he asked me, what is your start date and how many days are you looking at? I say my start date is A3 and the days are in B3. And I say, okay, I make it a date format, and there you have it. 29/12/21 is the next working day. 8 days from 18. You need to understand that the work day works on a format where a Saturday and Sunday is considered to be a holiday. It takes into account Saturday, Sunday as holidays. So it's basically calculating 5 working days a week. And we can't do much about it. That's the format which has been created as per international standards, where they don't work on Saturdays, Sundays, they work 5 days a week. On the basis of that, he's giving me the result of the 8th working day in the calendar. So let's move on further. The same way, I also have a calculation of a week day. If I put a date, and I want to know which day of the week is this. So I put equals to weekday, and I say I want to know which weekday is this, and I say okay, this is my date. He said it's the 7th day of the week. How come it is 7? Today is Saturday. Because the calendar starts not from Monday. The calendar starts from Sunday. All right. Yes. Are we clear? The calendar, if this formula you're applying, will always start from Sunday. So whatever day of the week you're getting is based on the calendar starting from Sunday. And technically, if you see, actually your week starts from a Sunday. हमारे इंडिया में तो 6 days वर्किंग होता है, मंडे टू सैटरडे. वो हिसाब से तो संडे मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि हाँ भाई हमारा वीक संडे से चालू होता है, फिर मंडे ऑनवर्ड्स वी आर बैक टू आवर वर्क अप टिल सैटरडे. So you'll say, sir, what if I want to know the day of the week? ये जो है 04/09/2021. What is the day of this date? इसका मुझे डे निकालना है. So I put equals to text. Why text? Because I'm trying to extract text values from a date. That's why I use the formula known as text. कि भाई तुम text value इस date में से extract करो. Date कहाँ है भाई? Date हमारा A4 column में. ठीक है. And what do we want? We want the day. So exclamation mark 1, 2, 3, 4 D's you put. That's your formula to extract the day of the week. ये लीजिए. But perfect Saturday.
He gave me the day of the week based on the date. Now, ऐसा है कि we all generally would love to know हमारा EMI calculation कैसा होता है अगर हम we decide to take some loan, we want to calculate some EMI based on certain interest rate. How can we calculate all the different aspects of EMI? This is very good for people who are into the loan department or जो loan के business में हैं. There are certain aspects when we look at taking a loan from a bank or a financial institute. One is called a PMT. Second is a rate. Third is something that we call as NPER. Fourth is PV and fifth is FV. ये 5 एस्पेक्ट्स हमारे EMI कैलकुलेशन में इंपॉर्टेंट है. PMT क्या है? PMT हमारा कैपेसिटी है to be able to pay a particular amount every month. So I say I am able to pay, let's say 1,000 rupees PMT every month. रेट क्या है? रेट इज द इंटरेस्ट रेट. अगर साल का 6% इंटरेस्ट हुआ तो महीने का 0.50% हो गया. ठीक है. NPER क्या है? NPER इज द ड्यूरेशन ऑफ योर लोन, कि भाई कितने महीने का लोन आप लेना चाहते हो. तो उसको हम मंथ में लिखते हैं. प्रेजेंट वैल्यू क्या है? प्रेजेंट वैल्यू है हमारा 1,50,000 का लोन लिया हुआ है. चलिए, फ्यूचर वैल्यू हम 0 डालेंगे बिकॉज आई वांट टू पे ऑफ माय लोन इन द ड्यूरेशन ऑफ 240 मंथ्स. These are the 5 aspects which are involved in a calculation. Now we are assuming I don't know the duration. But I say I've got the capacity of being able to pay 1,000 rupees a month. I put minus 1,000 because my money is going out of my bank. That's the reason why we put the PMT always as minus 1,000. ये हमारा एक fixed format है, एक fixed rule है whenever we are calculating EMI. Rate obviously I told you 6% के हिसाब से आपको. I know that I'm taking a loan of 1,50,000 rupees and I say मुझे पता लगाना है कि मुझे कितना टाइम लगेगा ये लोन पे बैक करने के. How much time is it going to take? So I go equals to NPER. The best part of it is all the terms that I have given you all, सबका हमारे पास एक फंक्शन है. उस फंक्शन के बेसिस पे कैलकुलेशन अपने आप हो जाता है. हमको कोई टेंशन या वरी इसकी है ही नहीं. So I do NPER, I go to FX. The function box tells me, yes, please tell me what is it. First he tells me what is the rate. I say rate दिया हुआ है भाई 0.5. PMT क्या है? आपका कैपेसिटी पेमेंट करने का क्या है भाई? 1,000 रुपीज अ मंथ. प्रेजेंट वैल्यू क्या है? प्रेजेंट वैल्यू है हमारा 1,50,000.
फ्यूचर वैल्यू क्या है? फ्यूचर वैल्यू 0 होगा. In that much period of time, I want to be able to pay back the entire loan. ठीक है, आंसर आ गया. इसको अगर राउंड ऑफ करना है तो डेसिमल्स को डिक्रीज कर सकते हैं. 278 months it's going to take me to pay back 1,50,000 rupees. Just imagine 278 months. कितने साल हो गए भाई? 20 से ऊपर हो गए. If I take a loan of 1,50,000 at an interest of only 6%, and with the willingness to pay 1,000 rupees a month, it's going to take me 278 months to pay off this loan. The same figure, if I had to have one more zero, 1,000 के बदले अगर मैं 10,000 भर रहा हूं, तो automatically in 16 months, which is close to 1.5 years, I will be able to pay back my entire loan. This is how the NPR can be calculated. Where I know that I have to pay per month 11,000. I know that my interest rate is 1%. I know that my NPR is 16 months. I want to find out how much loan can I get. Rate, NPER, per month value, future value 0. I'm not going to leave behind anything. I'm going to pay it off in 16 months. This is the amount of loan I will get. 1,61,896. Just imagine he gives me a proper figure. 0.61. If I have 11,000 rupees and I'm willing to pay an EMI of 11,000 a month, 1% per month for 16 months. This is the loan I'll get. If I say मुझे 16 months के बदले 5 years, that means 60 months के लिए I'm willing to pay 11,000. How much loan can I get? 4,94,505. जैसे ही मेरा NPR चेंज हो गया, मेरा लोन अमाउंट चेंज हो गया. सेम वे बैंक से अरे आपको रेट डाउन कर दिया हमने, 0.50% अभी चार्ज करेंगे, तो देखते हैं हमारा लोन अमाउंट चेंज होता है क्या. लोन अमाउंट बढ़ गया, but then I say if I'm getting at 0.5% for 60 months, then why should I pay 11,000? I want to pay only 8,000. Then how much loan will I get? Because bank has dropped the interest rate, then why should I contribute more? I want to contribute only 8,000. 4,13,000. So, first case I showed you how to calculate the number of months it will take you to pay back. Second case I showed you how you can calculate the loan that you can get. Now I'm coming to a very interesting aspect, the EMI calculation. 60 है, प्रेजेंट वैल्यू है, फ्यूचर वैल्यू 0 है, प्रेजेंट वैल्यू 4 लाख है, 60 मंथ्स है, रेट है 0.50. आई वांट टू गेट द EMI. $7,733.12 if I pay, then I will
have zero future value, and I'll be able to pay back my 4 lakhs for 5 years at a rate of 0.50. अगर इंटरेस्ट रेट बैंक ने बढ़ा दिया, बोला 1% भरना है, मेरा ईएमआई बढ़ जाएगा 8897 भरना पड़ेगा मुझे अभी टू पे ऑफ 4 lakhs. ड्यूरेशन चेंज हो गया, बोलेगा नहीं मैं आपको मोर देन 48 मंथ्स नहीं दे सकता हूं पे करने के लिए, और भी ईएमआई में प्रॉब्लम हो जाएगा. I have to pay even more because my duration of the loan is reduced, my interest rate has increased. That's why my EMI is gone up. This is how we can calculate various aspects, right from the EMI to the present value of a product, the future value to also the loan duration as to for how long I have to pay a particular loan that I have taken.